अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक जजमेंट आया है, उसका नाम है सुप्रियो एट द रेट सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो यस, सो दिस इज द जजमेंट. सो ऑलमोस्ट 3 वीक बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 के रेशियो से ये जजमेंट प्रोनाउंस किया है. So the hearing for the same-sex marriage is planned for 10 days in April and May. उसके बाद the proceedings before a 5-judge bench led by CGI चंद्रचूड़, और ये लाइव स्ट्रीम हुई थी on 11 May. A 5-judge bench, constitution bench headed by Chief Justice Chandrachud, including Justice Sanjay Kishan Kaul, S. Ravindra Bhatt, Hema Kohli, yes, P.S. Narasimha. So they reserved its verdict. उन्होंने इसको रिजर्व कर लिया on the place after a marathon hearing of 10 days. So finally जो जजमेंट आया वो हमारा आया 17 अक्टूबर को. That is almost 3 हफ्ता पहले. Okay. So petitioners through senior advocate including Mukul Rohitgi, Abhishek Manu Singh, Raju Ramchandran, etc. have stressed on the equality rights of the LGBTQIA+. Okay. They give their stress on the equality of law like US, Canada, Australia, Argentina, South Africa and Taiwan. We also have even though we also have a developed law. So सिर्फ ये ही कंट्रीज हैं 32 जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करती हैं. ओके, एंड वी आर अंडर द प्रोसेस कि हम इसको अलाउ करें या ना करें. दैट इज़ वाई रिव्यू पिटिशन भी फाइल कर दी गई है. सो सीजीआई की इसमें क्या ओपिनियन थी? डू नॉट एक्सेप्ट द सेंटर स्टैंड. सीजीआई ने सेंटर का स्टैंड एक्सेप्ट नहीं किया, जो मैंने आपको अभी बताया, दैट द इशू ऑफ सेम सेक्स मैरिज कैन ओनली बी डील्ड विद द पार्लियामेंट, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, एंड नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट. So CGI what said, CGI Chandrachud said that queerness is neither urban nor elite. तो he tell के queerness जो है ना वो urban है और ना ही elite है. Okay, so he उनकी contention ये है कि queerness is totally okay. CGI Chandrachud says that it is incorrect to categorize marriage as a stagnant and unchanging institution. So एक जो डेवलपिंग नेशन होता है उसको वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है. हम लोग के भी लॉज, एंशिएंट लॉज अलग थे, हमारे मिडाइवल में हमारा लीगल सिस्टम अलग था. फिर जैसे जैसे हमारा इंडियन स्ट्रगल हुआ, इंडियन फ्रीडम आया, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर उसके बेसिस पे हमारे जो लॉज बने हुए थे उससे पहले वाले भी, तो दे आर अ मॉडर्न लॉज एंड दे आर चेंजिंग ऑल्सो. जैसे अमेंडमेंट होते हैं या कुछ एक्ट्स रिपील हो जाते हैं या कुछ सेक्शंस को अमेंड किया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट. सो सीजीआई ने यही कहा कि जो मैरिज का नोशन है इसको भी हमें स्टैग्नेंट या अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन नहीं करना चाहिए. इफ़ द कंसाइंस ऑफ द पीपल कि उसको हम चेंज कर सकते हैं तो हमें उसको चेंज करता रहना चाहिए. ओके, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर यू? ओके ओके. He says the Supreme Court cannot strike down the provisions of the Special Marriage Act. पीजीआई ने जजमेंट में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट को. सीजीआई's opinion leaves it to the parliament to decide on the issue. सीजीआई ने कहा कि the parliament should decide the issue. By striking down the Special Marriage Act provisions, the benefit of progressive legislation will be lost, says Chandrachud in his opinion. Okay. सो जो एक प्रोग्रेसिव हमारे लेजिस्लेशन है स्पेशल मैरिज एक्ट के, क्योंकि दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम द फैमिली लॉ, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, तो एक जो प्रोग्रेसिव हमारे लेजिस्लेशन है वो लॉस्ट हो जाएगा. फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सीजीआई ने कुछ डायरेक्शंस दी सेंटर को
And what are these directions? So directions are ensure queer community is not discriminated against, कि इस community को discriminate ना किया जाए. So these are the directions which are given by the Honorable Chief Justice of India. And the first is, okay, the first is ensure queer community is not discriminated against, कि उनका discrimination ना हो. That is why CGI ने, हमारे respected CGI ने, I mean, फॉर में दिया इस जजमेंट को. इस जजमेंट में उनका जो पार्ट था वो फॉर में था. ही इज़ नॉट अगेंस्ट दिस बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन. इंश्योर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, के उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज में भी प्रॉब्लम ना हो. सेंसिटाइज करें आप पब्लिक को अबाउट द क्यूर कम्युनिटीज़, कि आप क्यूर कम्युनिटीज़ को ऑकवर्डली ना लें. आई मीन जो हमारे LGBTQI+ हैं इनको आप ऑकवर्ड ना लें. दे आर ऑल्सो कॉमन एंड दे आर ऑल्सो लाइक अस. So there should be no discrimination. So he further orders that center should create a hotline for queer community. कि अगर queer community के members को कोई problem है, so there should be a hotline number that can give them a proper counseling. Okay. Okay. Create safe houses or garema gray for queer couples. Queer couples, LGBTQI+, they most of the time they face a lot of discrimination in the society. So what our respected CGI had said, that there should be safe houses and garima gray for queer couples. He also said further, ensure intersex children are not forced to undergo operations. कि intersex children जो है उनको force operation ना कराए जाए. अगर वो voluntarily अपना सेक्स चेंज कराते हैं दैन दे कैन गो फॉर दैट. अदरवाइज उनसे ये ना कहा जाए कि आपको फोर्स ना करा जाए कि आपको करना ही है. इट्स अप टू देयर विश एंड विशेस एंड विम्स. ओके. ओके. और किसी बंदे को भी नो पर्सन शैल बी फोर्स टू अंडरगो एनी हार्मोनल थेरेपी. तो किसी को हार्मोनल थेरेपी के लिए भी फोर्स नहीं करना है, क्योंकि जो भी जैसे पैदा हुआ है दैट इज गिफ्टेड बाय द गॉड, दैट इज गिफ्टेड बाय द भगवान. सो हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके हार्मोन्स को, उसकी फीलिंग्स को एंड उसके इमोशंस को. सो दिस इज़ हाउ जो आया है, जो भगवान ने जैसे बनाया है, दैट पर्सन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. ही ऑल्सो इशूज गाइडलाइंस टू पुलिस टू नॉट हैरेस क्यूर पीपल और फोर्स देम टू रिटर्न फॉर देयर नेटल. ओके. जो इन दिस जजमेंट CGI ऑल्सो गिव्स गाइडलाइन टू द पुलिस कि वो इन लोगों को हैरेस ना करें. आपने देखा होगा स्पीच पे द पीपल ऑफ LGBTQI+ ट्रांसजेंडर्स एज वेल, इन लोगों को पुलिस वाले काफ़ी हैरेस करते हैं. तो दैट इज़ अ प्रिकॉशनरी रिमार्क फॉर द पीपल ऑफ पुलिस. जी. ओके. आपको समझ आ रहा है? दैट्स नाइस. ओके. नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट. All 5 judges agree that there is no fundamental right to marry. So judges ने इस चीज़ को agree हुए, ये fundamental right नहीं है, right to marry, that this is not a fundamental right. Supreme Court refuses to grant constitutional validity to same-sex marriages by a 3:2 majority. So 2 judges were in the favor of same-sex marriage and 3 judges were not in the favor. Okay, that is decided by a 3:2 majority, and this is important. Sometimes in the exam they used to ask, what is the majority in this judgment? So that should be 3:2. Also, no constitutional or fundamental right to civil union. Center proposed high-powered committee to examine concerns of same-sex couples. So center said that there should be a high-powered committee to examine concerns of same-sex couples and no right for queer people jointly adopt. तो वो एक सेंटर ने कहा है कि हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो एग्जामिन करेगी सेम सेक्स कपल के इश्यूज को, और ये भी एग्जामिन करेगी कि क्यूर कपल किन पोजीशंस में या किन कंडीशंस में दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड. फर्दर CGI DY Chandrachud, Justice Sanjay Kishan call both favor to accept the same-sex marriage.
इन दोनों ने एक्सेप्ट किया कि सेम सेक्स मैरिज इज होना चाहिए एंड दैट शुड बी गेट आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन आवर इंडियन लॉज. बट जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली and Justice P.S. Narasimha, so claim no interest in that. So बहुत टाइम होता है कि पीटी में ऐसा पूछ लेते हैं कि who are the judges who have a minority opinion in particular judgment. तो you have to know कि किसने क्या judgment दिया था, किसकी minority opinion थी और किसकी majority opinion थी, and you must आपको ये भी याद रखना है कि what is the ratio of this judgment. Now move forward. So this is all, and after that, after this, review petition has been filed. ये judgment complete हो गया. इसके बाद what happened next? Review petition file करी गई है because the people who were involved in the case, they are not happy with it, so they file a review petition. So in this review petition, what happens? The review petition has been filed in the Supreme Court against its judgment in Superior versus Union of India, which refused to legalize. So in this judgment, I had told you earlier, it refused to legalize same-sex marriages. The review petitions filed by 4 petitioners. So that is their name: Udit Sood, Satwik, Lakshmi Manmohan, and Gagandeep Kaufal. And their contention is that there is a fault in the judgment for not affording any legal protection to queer couples. So what is your contention? A review petition में कि legal protection afford नहीं करी जा रही है queer couples को, despite acknowledgement of the discrimination faced by them. Okay, so discrimination is real. The queer community face the discrimination, which is also, noted and said by the CGI D.Y. Chandrachud, कि ये discrimination है. That is why he gives some guidelines in this judgment. So this review petition amounts to application of the court's duty to uphold and protect fundamental right. तो petitioners की second condition ये है कि ये इसके लिए हमने review petition क्यों डाला है, क्योंकि Supreme Court is the protector of the fundamental right. And this is the fundamental right to marry, so this should be safeguarded by the Supreme Court. और यहाँ पर Supreme Court क्या कह रहा है कि we can't give a judgment on this, and this law should be made by the Parliament. So here, Supreme Court is abdication of a duty to uphold and protect fundamental right. So this is their contention. Let's see रिव्यू पिटीशन में क्या होता है, एंड आप लोग भी अपना बताएं मुझे कि व्हाट आर योर व्यू कि सेम सेक्स मैरिजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इंडिया अभी एट प्रेजेंट स्टेज अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, या फर्दर इसको यहाँ पर लागू होना चाहिए. सो जो आपकी कंटेंशन हो या जो आपके थॉट हो रिगार्डिंग दिस, वो भी आप मुझे बताइए. ओके, थैंक्स अ लॉट. नाउ ये लीगल इशू यहाँ पर ख़त्म हुआ, and we are eagerly waiting for the review petition now. Okay, thank you class.